Welcome everyone on the third lecture related to our third unit of human resource management as training and development. We studied in the past lecture related to training functions, which are like research, analysis, development, operation, and evaluation. So all these particular functions which are performed under training can be further discussed, can be understood in context of the concept of training process. So let's start with what is training process, and then individually each unit or each stage of training we'll be discussing elaborately. Let's have understanding about training process. So when we look forward for training process, it need to start from the point where we can come understand or we can come across about that what should be the content, or we can say what we are training for. So in that regard, when we look forward for the first stage which is available under training process is called your training need identification. This is another way termed as training need analysis. So when we look forward for this particular stage, we just not only going to have understanding that what should be the training related aspects, or we can say what training aspect need to be dealt, whereas it also identifies that when someone provides their needs, that whether these needs are going to meet the objectives, whether these needs are beneficial for the organizational purpose, for the personal purpose, or we can say for the purpose of individuals skills enhancement or their task related performances. So when we look forward for training need identification, this training need identification provides us all the needs on which an individual has to be trained, that will get analyzed. After the whole overall needs being developed, we identify different aspects of training which need to be provided, different dimensions of the content which need to be dealt in the training through the training analysis as an outcome of training need identification. That's why it is also called training need analysis. Once we know what type of needs to be covered, what type of needs to be delivered, to be fulfilled through the training, we need to decide about the objectives of the training. So what does it mean? ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या है? अगर हम इसको देखना चाहें तो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग वही है जो कि हम नीड के बाद, नीड को फुलफिल करने के बाद इंडिविजुअल को एफिशिएंट इफेक्टिव आउटकम बनाने के लिए चाहते हैं. सो इफेक्टिव और एफिशिएंट आउटकम that will be available only when the person is competent, when the person's competency will be enhanced. And how the competency of individual is going to enhance, that will be through the training. So when we have training need identified, we set certain targets for that training program. उस training program के लिए हम क्या करते हैं, कुछ targets को set करते हैं, और ये जो targets set होते हैं इसके accordingly ही हम training की process को आगे को बढ़ाते हैं. Now when we have our objectives, when we have our targets being available, the ultimate outcome of the training being decided, then ultimately we have to decide that what should be the कंटेंट इनसाइड द ट्रेनिंग प्रोग्राम. हमें पता है कि किसी एक इंडिविजुअल को क्या ट्रेनिंग करवानी है, किसी एक इंडिविजुअल को ट्रेनिंग कराने के बाद उसे क्या फायदा होगा, वो किन डायमेंशंस को, किन डेस्टिनेशंस को वो अचीव कर लेगा. और जब हमें इतनी सारी चीजें पता है तो उसके बाद वी लुक फॉरवर्ड फॉर व्हाट, वी लुक फॉरवर्ड फॉर देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी डेवलप्ड. जब हम किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो हम मेजरली दो डायमेंशंस को चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो इंडिविजुअल जो है उस
को क्या हम प्रोवाइड करें, मीन्स दैट इज व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग. नाउ व्हेन वी लुक फॉरवर्ड फॉर कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग और वी कैन से ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन, वी आर taking one dimension of content related to training, but along with that we have another dimension available, that is the method which we are going to follow, the another thing which can be taken, the material which we are going to use. So now let's just understand three terms. कंटेंट यानी कि हम किसी भी एक इंडिविजुअल को किस चीज की डिलीवरी करेंगे इन द ट्रेनिंग, उसमें हमारे पास क्या इनपुट्स रहेंगे, उन इनपुट्स को प्रोवाइड करने के लिए किन चीज़ों की हम हेल्प लेंगे, किन चीज़ों से हम एड लेंगे, किन टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट लेंगे, ये हमारे पास अवेलेबल होगा. द मटीरियल विच वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, द मटीरियल कैन बी अ पीडीएफ, मटीरियल कैन बी अ प्रेजेंटेशन, मटीरियल कैन बी अ वीडियो, मटीरियल कैन बी अ simulation kind of exercise being available. So that we have to identify. And the third thing which is being available, the method, how the person need to be dealt with, how the person need to be nurtured. तो क्या हम लेक्चर देंगे, क्या हम उसको जो है प्रैक्टिकल करवाएंगे, क्या हम उससे इनपुट लेंगे, फिर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. सो व्हाटएवर थिंग will come across, that will be the method. So when we are deciding about the training program, the first three dimensions are going to be the content, material and method. The other thing which is being available, that is the learning principle. So when we talk about learning principle, it says कि किसी भी पर्सन को कोई चीज जब हम सिखाने जा रहे हैं तो वो किस हिसाब से उन चीजों को सीखता है, कौन सी चीजें या कौन से नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल जो सीखना चाहता है और जो ट्रेनर सिखाना चाहता है वो पॉसिबल हो पाए. सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड फॉर दिस, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लर्निंग प्रिंसिपल. तो किसी भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो डायमेंशंस अवेलेबल हैं कि वो कंटेंट क्या प्रोवाइड किया जाए, उसमें मटेरियल कौन से यूज हो कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, और कौन से मेथड के थ्रू जो है किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, और साथ साथ कि इन सब कंटेंट की डिलीवरी के अंदर लर्निंग प्रिंसिपल्स को हम किस तरीके से यूज करें जिससे जो भी इंडिविजुअल उस ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, उस वो इंडिविजुअल क्या कर सके, वो कुछ ना कुछ इनपुट्स ले सके, उसकी कॉम्पिटेंसी में एनहांसमेंट हो, उसके करियर में एडवांसमेंट हो. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी कंसीडर द लर्निंग प्रिंसिपल. Now, once the training program being decided, design being done, so the next thing will be the implementation of the program. So when we implement all these programs, so with respect to the implementation of the things, what the outcome will be, we'll have some or the other intakes taken by the individual. We'll have individual getting certain inputs from the training program. Now when we look forward for these implementation aspects, we have decided in the second stage that there are certain objectives being given. हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मीट करने के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया. तो अब हम क्या करेंगे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट पे इन कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स वी विल बी इवैल्यूएटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेदर टेस्ट ट्रेनिंग कराने से पहले और ट्रेनिंग के बाद दोनों जो इंडिविजुअल है, दोनों केस में क्या इंडिविजुअल के स्किल्स में, नॉलेज में, एबिलिटीज में कोई चेंजेस आए, क्या उसकी कॉम्पिटेंसी डोमेन एनहेंस हुआ या नहीं हुआ, क्या वो प्रैक्टिकली चीजों को कर पाया. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डन against the objectives, and this particular thing is called evaluation. So evaluation will be providing us two things, evaluation of the employees and evaluation of the training program too. क्या हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम उन सारे के सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इट वाज एलिजिबल, और अगर वो केपेबल है या केपेबल नहीं है तो उसमें क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं जिसको हमें आगे भी क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है या आगे उन चीजों को रिमूव करना है. सो दैट इज हाउ द ट्रेनिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस. सो इफ वी लुक फॉरवर्ड
in this training process understanding, we have seen the functions inside the training. So we first function was the research, as we see. So this provided under your training need analysis. Once we are coming up with the training and analysis, then this research, the another function of your analysis will be providing us how we can convert this identified needs into certain training objectives. The another thing which we have seen, that is being the development. So development will be looking forward for programs to be designed, programs to be evolved, to be developed. So that is the third stage of it. Then we look forward for operation, that is the implementation of the program which we have designed, and thereafter we go for the evaluation as similar provided by the training function. Similarly, it is available in the training process. So this evaluation will be providing two dimensions: employees related improvement or the training program related improvement. So both the things will be taken and things will be implemented further. Now, once this is being done, this is the overall picture related to the training process. Now, let's just find out what is the training need identification, what is the training need analysis. So, training need analysis will be what? Training need analysis will be a process of identifying all those competency gaps which need to be fulfilled through the training. Training के through जिन gaps को हमें fulfill करना है, वो हमारे पास किसके through आ जाएंगे? Training need analysis या training need identification के through. Now when we have all these things available, तो हम इन identification को, इस analysis को किन जनों में कर रहे हैं? हमने जब selection process की थी तो हमारे पास दो तरीके के क्या हुए थे, दो तरीके के employees in हुए थे. One, that who entered in the organization externally. Second, there were employees those were available in the organization being transferred, promoted, demoted from different departments. तो हमारे पास किस तरीके के एम्प्लॉइज हो गए? नए एम्प्लॉइज और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. जब हमारे पास नए एम्प्लॉइज हैं तो नए एम्प्लॉइज से रिलेटेड हमारे पास कोई भी प्रीवियस परफॉर्मेंस का डेटा अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वी विल बी एक्सपीरियंसिंग देयर फर्स्ट हैंड परफॉर्मेंसेस व्हेन दे आर गोइंग टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसलिए हम उनके लिए अगर ट्रेनिंग नीड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं कि जिन कामों के लिए, जिन जॉब प्रोफाइल के लिए, जिन ड्यूटीज के लिए, जिन टास्क के लिए उन लोगों को अपॉइंट किया हुआ है, फॉर दोज टास्क हाउ मच दे आर एबल टू परफॉर्म, हाउ मच दे आर एबल टू वर्क independently on that particular profile. So when they are able to do so, तो हमारे पास क्या होगा? हम जो है उनके लिए ट्रेनिंग लैकुना या we can say competency lacuna identify नहीं कर पाएंगे. So in that case we are not looking forward for providing training to these individuals. So in new employees case what we will be seeing कि उस individual ने जिस job profile को ज्वाइन किया है उस task के correspondingly how much that person is efficient to perform all his responsibility. The second thing which is available, that is the existing employees. Existing employees are the employees those are well aware about the organization culture, behavioral perspective, organization climate related things. All the things are available with the individual. अब इस individual के लिए हमारे पास एक और inputs available हैं कि that individual has performed in different positions of the organization. So the person has got experience and the organization also has some information about the organization, about that individual. तो अब इस इंडिविजुअल के लिए हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो प्रीवियस उसकी परफॉर्मेंस का डेटा है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? उसके लिए कॉम्पिटेंसी मॉडल बना लेंगे. कॉम्पिटेंसी मॉडल के लिए हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन कॉम्पिटेंसी मॉडल समझ सकते हैं कि जिन एरियाज में वो इंडिविजुअल जो है अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था कुछ प्रीवियस पोजीशंस में, उन एरिया के करस्पॉन्डिंगली उन एरिया को इम्प्रूव करने के लिए हम कैसे प्रैक्टिसेस करें, that will be coming under competency model. So when we look forward for this, तो हम दो तरीके की चीजें कर रहे हैं. One is performance analysis, second going to be your task analysis. Now before going for these particular things to be understood, we must know what type of competencies are there.
कितने तरीके की कॉम्पिटेंसीज होती हैं। तो जब हमने कॉम्पिटेंसी डोमेन की बात की तो हमने 3 चीजें देखी, दैट इज द नॉलेज, स्किल्स एंड अबिलिटी डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल। नाउ इसके अंदर में हमारे पास जो कॉम्पिटेंसी है या KSAs हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। वन इज अवेलेबल बीइंग जेनेरिक एंड स्पेसिफिक. So we'll be just talking about these two initials. So generic are going to be how an individual is able to perform the general set of performances within the organization. अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे हम कहें कि इंडिविजुअल को कम्युनिकेशन भी करना है और इंडिविजुअल को अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, so that will be communication will be part of your generic competency.